इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से जेई मेंस 26 में ये सवाल आया था। क्वेश्चन में जो कुछ इन्फॉर्मेशन दी है हम वो लिख लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि हर एक कंडीशन जो कि क्वेश्चन में दी है उसका यूज आंसर निकालने के लिए होता है। सो हमें फाइंड आउट करना है 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा। इट मीन्स अल्फा एंड बीटा हमें फाइंड आउट करना है। और एक इक्वेशन दिया है tan इनवर्स 1 माइनस अल्फा प्लस tan इनवर्स 1 माइनस बीटा। इससे हमें एक फॉर्मूला याद आया होगा आपको, और उससे हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा। और वो फॉर्मूला है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल्स टू tan ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा ए इंटू बीटा। तो ये जो स्टेप है इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड को आप नोटिस कीजिए, उसके लिए दिया है π/4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू मैं लिख लेती हूँ π/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स and 1 minus alpha plus 1 minus beta is 2 minus alpha minus beta. So in the denominator 1 minus and in bracket 1 minus alpha into 1 minus beta is 1 minus alpha minus beta plus alpha into beta. On solving minus 1 and plus 1 will be 0 and alpha plus beta minus alpha into beta. Now अब हम tan ऑफ π/4 ले लेते हैं और राइट हैंड साइड में क्या है 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। नाउ वी नो tan π/4 is 1, so denominator will be equals to left in the right hand side we can write, so alpha plus beta and alpha plus beta 2 times alpha plus beta and right hand side is 2 plus alpha into beta. Now we have beta is equals to 1 by 3 alpha. So replace this beta by 1 by 3 alpha. Now alpha into 3 alpha is 3 alpha square plus 1 divided by 3 alpha, and alpha will be 1. So 2 plus 1 by 3 is 7 by 3, and now alpha square plus 1 equals to 21 alpha. So 18 alpha square minus 21 alpha plus 6 is equals to 0. Now on dividing by 3 we will get quadratic equation which is alpha square minus 7 alpha plus 2. So let's find out roots of this quadratic equation, and we will get 3 alpha, 2 alpha minus 1 minus 2 into alpha minus 1. So we have alpha is equals to half और alpha is equals to 2 by 3. Now हमें अल्फा के लिए एक रेंज दिए है, अल्फा है 0 to 1 के बीच में है। तो हम देख सकते हैं ये दोनों भी अल्फा 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन 1 के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो अगर मैं अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 ले लेती हूँ तो मुझे बीटा मिल जाता है। सेकेंड अल्फा इज इक्वल्स टू 2/3, then beta is equals to we will get beta is equals to half. So we have 6 into alpha plus beta is equals to, अगर कौन सी भी एक कंडीशन हम अगर चूज कर लेते हैं तो हमें सेम अल्फा प्लस बीटा मिलेगा, क्योंकि जब अल्फा इज हाफ है देन बीटा इज 2/3 एंड जब अल्फा इज 2/3 तब बीटा इज हाफ. So addition is 7. 6 into alpha plus beta is equals to 7. Here is our final answer. Bye bye.